Hello my dear kids, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 3. So children, this is your book, Joyful Mathematics, and today we are going to do chapter number 12, Money. So let's start the chapter. Here we have to write the following amounts in figure. In amounts को हमें figure में लिखना है. So here you can see 50 plus 10 plus 10. So 50, 60, 70. 70 rupees, 50 paisa. So it is written as 70 rupees and 50 paisa. Similarly, you have to do the rest questions. We need money for buying things. अगर कोई भी चीज हमें खरीदनी तो हमें क्या चाहिए? Money. Money is issued in the form of metal coins and currency notes. तो आप देख सकते हो coins और notes के रूप में ही हमें मनी मिलता है. वी आर फेमिलियर विद दीज करेंसी एंड नोट्स. सो इन कॉइन्स और नोट्स को हमने पहले ही देख रखा. 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी. ना नोट्स की बारी आ गई. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. We use P to write पैसा, R for rupees. The rupee is a large unit of money than a पैसा. Rupees जो है पैसे से ज़्यादा होते हैं. So 100 पैसा make 1 rupee. जब आप 100 पैसे इकट्ठे कर लोगे तो आपको 1 rupees मिलेंगे. So 1 rupee is equal to 100 पैसा. Now writing rupees and पैसा कैसे लिखते हैं हम इन्हें? When we write rupees and पैसा together, we separate the rupee and पैसा by a dot. दोनों के बीच में हम एक डॉट लगा देते हैं. We can write rupees 10 and 45 paisa is 10 rupee 45 paisa. When we put a dot, we do not use the word paisa. जब हम डॉट लगाते हैं तो हम पैसा वर्ड नहीं यूज करते हैं. So rupees 6 and 80 paisa is written as rupees 6.80. Rupees 5 and 5 paisa is written as rupees 5.05. Now let's do the given exercise. Exercise number 12.1. Here we have to complete the given table. We have to write down the money in figures and in words. So here it's 500, 600, 10 and 25. So it is rupees 610 and 25 paisa. So how we will write it as 600 rupees, 610 rupees and 25 paise. Clear children? So like this you have to do the rest of the given work. Now question number 2 says write the following amounts in figure. So 115 rupees and 65 paisa. So 115.65. 512 rupees. So rupees 512. So like this you have to do the rest. Now write the following amounts in words. So again it is 115 rupees and 40 paise. I hope this is clear. Similarly, you have to do the rest of the questions, children. Here, this one is 4 paise. Clear? Now, conversion of money. Money को कैसे convert करते हैं? How can we convert rupee into पैसे? Rupees को पैसे में कैसे convert करना है? So for conversion, we should know that 1 rupee is equal to 100 paise. So जिस भी rupees को हमें convert करना है उसे हमें 100 से multiply करना होगा. So for converting 16 rupees, we have to multiply this by 100. It will be 1600 paise. 9.45 है तो उसमें हमें 9 को हमें 100 से multiply करना है. So it will be 900 plus 45, which will be 945 paise, and so on.
नेक्स्ट इज कन्वर्शन ऑफ पैसा इनटू रुपी. पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करना है. सो ये 1600 पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है. फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड दिस 1600 बाय 100. 100 से डिवाइड करेंगे. सो व्हेन वी डिवाइड इट बाय 100 वी गेट 16 rupees एज द आंसर. सिमिलरली 9525 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में. तो ऐसे भी हमने 100 से डिवाइड किया. वी गेट 95 rupees and 25 पैसा. Now children, let's move on to exercise 12.2. Here we have to first convert this into paisa. So let's multiply it by 100. So it will be 1800 paisa. Now again here we have to multiply this by 100. So it will be 1128 paisa. I hope this is clear. Now convert into rupee and paisa. Rupees और पैसा में convert करना है. So here we have to divide this by 100. So it will be rupee 198 paisa. Here again we have to divide this by 100. So it will be 28 rupee and 0 paise. I hope this is clear. So similarly children, do the rest questions. Addition and subtraction of money. कैसे add करते हैं? So to add money in the same, we add money in the same way as we do the addition of the given numbers. Here we have to add 45 rupees and 46 paisa and 11 rupees 50 paisa. So 6 plus 0 will be 6, 4 plus 5 will be 9, 5 plus 1 will be 6 and 4 plus 1 will be 5. Here again we have to add 225 rupees, 68 paisa and 196 rupees 25 paisa. Remember to convert the decimal form first. तो यहाँ पे हमें इस रुपीज और पैसे को we have to add. So हमने इसे पहले decimal में convert कर लिया है. Now we have added it. So we get 421 rupees and 93 paisa is the answer. Now let's subtract the given money. So we have to subtract 48 rupees and 75 paisa and 27 rupees and 25 paisa. We have to subtract them. So on subtraction we get 21 rupees and 50 paisa as the answer. We have to subtract 569 rupees and 55 paisa from 814 rupees. Now on subtraction we get 244 rupees and 45 paisa. So children, after understanding all this, let's do this exercise number 12.3. Here we have to add the given numbers. So 8 plus 2 is 10. 1 is carried. 4 plus 7 plus 1 is 12. Now 6 plus 1 is 7. 2. So here the answer is 27 rupees and 20 paisa. I hope this is clear. Now children, let's move on to the next question. Put each of the following column and add. Column में लिखना है और इन्हें add करना है. So here let's do this one. Rupees and paisa we have written here. So 14 rupees 55 paisa and 22 rupees 45 paisa. Let's add them. So it's 10. It's 10 again. 7, 3. So 37 rupees and only 37 rupees is the answer. So rupees 37. Similarly children, you have to arrange the rest of the questions and do them. Next is subtract the following. From 10 we are going to subtract 8. It will be 2. Now 3 में से 9 will not go. So it will be 1 here. 4. 11 में से हमने कट किया. So 11 minus 2 will be 9. Now 6 minus 2 will be 4. And 3 minus 1 will be 2. So the answer is 249 rupees and 42 paise. Now children, let's move on to question number 4. Here we have to subtract the given money. So let's subtract them. So let's arrange the given numbers in the given column. Let's do this B1.
So 43 rupees and 85 पैसा में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 29 rupees and 75 पैसा. So it will be 0, 1, 13. So 13 minus 9 will be 4. 3 minus 2 will be 1. So here the answer is 14 rupees and 10 paisa. So similarly, children, do the rest of the questions. Now let's move on to the word problems. Ritu has 54 rupees and 25 paisa. Her mother gave her 24 rupees and 25 more. तो रितु के पास इतने पैसे पहले से थे, बट उसकी मम्मी ने और पैसे दे दिए. हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ? तो हम क्या करेंगे, मनी ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सो वी हैव टू ऐड इट. So on adding we get 78 rupees and 50 paisa. Now next example is Reena spent 95 rupees 50 paisa on gifts for her mother. तो रीना ने क्या किया, अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदा इतने रुपीस का. Her brother spent this much rupees. उसके भाई ने इतने पैसे खर्च किए. How much more money does she spend than her brother? तो आपने देखा कि रीना ने अपने भाई से ज्यादा पैसे खर्च किए. कितने ज्यादा खर्च किए? तो हम क्या करेंगे, रीना का अमाउंट और उसके ब्रदर का अमाउंट दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 23 rupees and 25 पैसा. इतना पैसा रीना ने ज्यादा खर्च किया था अपनी मम्मी को गिफ्ट देने में. सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 12.4. I took this much from the shop and bought a book of this much. तो मैं इतने पैसे शॉप पे ले गई और इतने रुपए की बुक खरीदा. How much money was left with me? So here we have to subtract. So let's subtract 70.60 में से हम 13.90 को subtract करते हैं. So here it will be 16. Now 16 minus 9 will be, so total amount is rupees 56 and 70 पैसा. तो इतने पैसे मेरे पास अभी बचे हुए हैं. So similarly, children, do the rest of the questions. Now multiplication and division of money. कैसे multiply और divide करते हैं money को? So money can be multiplied and divided by a whole number. Whole number से हम इसे multiply या divide कर सकते हैं. We have to multiply 12.25 by 6. तो 6 से मल्टीप्लाई करना है. वी डू द रेगुलर मल्टीप्लीकेशन. रेगुलर मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं 6 5 30, 0 यहाँ 3 वापस ऊपर चला गया. 6 2 12 plus 3 is 15. Now 5 is written here, 1 is carried over. 6 2 12, 12 plus 1 13, 3 यहाँ लिख दिया, 1 carried, 6 1 6 plus 1 7. So 73 rupees and 50 paisa is the answer. Similarly, we will divide the money by a whole number. अब 120 rupees को डिवाइड करना है हमें 8 से. तो हमने सेम डिविजन किया जैसे हम करते हैं, and on division we get 15 as the answer. So let's quickly move on to exercise 12.5. Here we have to multiply the given number. So let's multiply 18 rupees and 60 paisa by 5. 5 0 0, 5 6 are 30, 5 8s are 40, 3 5 1s are 5, 6 7 8 9. So 9. So here the answer is 93 rupees. So let's write the answer. 93 rupees is the answer. Now let's do the another question, division. So here we have to divide. Let's do this B1. So 88 rupees को हमें divide करना है 2 से. So it will be 88 को divide करना हमें 2 से, तो 4 times is 8. Now 0. 4 times is 8. 0. So the answer is rupees 44. I hope this is clear, children. So like this, do the rest of the division. Now let's multiply the given number. Here the numbers are given. 5 5s are 25, 2 5 8s are 42, 4 5 6 are 34, 5 1 5 6 7 8. 84.25.
So children, this is your answer. Like this you have to multiply. Now let's divide the given number. 4 से divide करना है तो 4, 2 times is 8, 1, 5, 4, 3 times is 12, 3, now 4 आया, 4, 8 times is 32, 2 आया, next 8, so it will be 0. So the answer is 23 rupees and 87 paise. So children, like this you have to do the rest questions. Now let's move on to the word problems. Cost of 1 pen is given 14 rupees and 45 paise. Find the cost of 7 pen. So जब 1 की cost दी है और ज़्यादा की निकालनी है तो we always multiply. So we have to multiply this 14 rupees and 45 paise by 7. So on multiplication we get 101 rupees and 50 paise. Now cost of 6 ball is 102 rupees. Find the cost of 1 ball. So ज़्यादा balls की दी है 1 की निकालें, so we always divide. So 102 को हम 6 से divide करेंगे, we will get 17 rupees as the answer. So now let's move on to exercise 12.6. Here the pen cost rupees 6.20. What is the cost of 9 pen? So 1 की दी है, ज़्यादा की निकालें, so we always multiply. So we have to multiply this by 9. So here the answer will be rupees 55.80. 55 rupees and 80 paise. So similarly children, do the rest of the questions. Now what is a bill? I am going to the restaurant with my family. मैं अपनी family के साथ restaurant जा रहा हूँ. I really enjoy looking at the menu card and ordering a lot of dishes. मैंने menu card देखा, उसमें बहुत सारी dishes को order किया. It is a statement which tells you how much money we have to pay. Okay, तो अब हमने चीज़ें order कर दिया. अब जो है वो जो रेस्टोरेंट ने हमें क्या दिया, एक बिल दिया. तो मैंने पापा से पूछा कि क्या है ये, तो पापा ने क्या बोला कि जो भी चीज़ें हमने ऑर्डर की है उसको सारा टोटल करके हमें ये बिल दिया गया, कितने पैसे हमें देने हैं. सो हाउ कैन वी मेक बिल्स? Whenever we buy something from a shop, the shopkeeper gives us a bill of thing. तो शॉपकीपर क्या कहता है, हमें बिल देता है. A bill tells us what or how much the quantity we bought. ये बताता है कि हमें कितनी क्वांटिटी खरीदनी है. Here Shivani bought a packet of sugar for 40 rupees. 40 rupees का उसने पैकेट खरीदा शुगर का, and flour for 18.50 and salt for 15.50. Make a bill for her. तो शुगर था 1 kg, 40 rupees था, और टोटल उसने 1 किलो खरीदा था तो 40 रुपीज उसे देने थे. फ्लोर भी 1 kg 18.5 का था तो 18 रुपीज 50 पैसे देने थे. सॉल्ट था 1 kg तो इतने रुपीज का, तो 15 रुपीज 50 पैसे देने पड़े. नाउ वी हैव एडेड दिस, तो टोटल पैसे उसने कितने दिए, 74 रुपीज उसने शॉपकीपर को दिया. लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 12.7. आरुष वेंट टू अ शॉप. एक शॉप पे गया. रीड विच आइटम ही बॉट. तो उसने बॉल खरीदे 8 रुपीज का, टॉय खरीदा 65 रुपीज का, टेडी बियर 70 रुपीज, सेट ऑफ ब्लॉक्स 45.50, काइट 8 रुपीज for 25 पैसे, एंड बलून्स 3 रुपीज के ईच. नाउ देन मेक द बिल विच हेल्प्स विद द हेल्प ऑफ द प्राइस लिस्ट. तो चलिए हम जल्दी से नंबर्स लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो 6 आइटम्स हैं. ओके, अब इसमें से आरुष बॉट 3 बॉल्स. उसने 3 बॉल्स खरीदे, तो नाम है बॉल्स. कितनी खरीदी, 3. रेट क्या था, 8 रुपीज की एक बॉल थी, तो 3 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे. 3 8 is 24. 24 रुपीज 0 पैसे की थी.
नेक्स्ट उसने खरीदा अ टॉय कार, टॉय कार खरीदा, तो टॉय कार लिख देते हैं। कितने रुपीस की था यार? 1 खरीदा है, कितने का? 65 रुपीस का, तो उसने कितने पैसे दिए? 65 रुपीस। नेक्स्ट उसने खरीदा 3 बलून्स, तो बलून्स खरीदे उसने कितने? 3, और बलून्स की क्या कॉस्ट है? 3 रुपीस, तो 3 × 3 इज 9। ना उसने खरीदा टेडी बियर, सो टेडी खरीदा उसने 70 रुपीस का, एक खरीदा 70 रुपीस का, तो उसने 70 रुपीस दिए। सो टोटल उसने कितने पैसे दिए? वी हैव टू ऐड all this amount. इन सबको ऐड करेंगे, we will get the answer. So this you have to do on your own. You have to add the given numbers. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay lated.